Question number 1. The position of the President of India as the elected head of the state is reflected in which one of the following constitutional ideals of India? The correct answer is Republic. Question number 2. Which of the following statements is not correct with regard to the President of India? He or she is regarded as the first President of India. Yes, it is correct. He or she acts as the Supreme Commander of the Defence Forces of India. Yes, it is also correct. He or she subscribes to an oath administered by the Vice President. No. This statement is incorrect because President administered the oath the Chief Justice of India or the senior most to the Supreme Court. So the correct answer will be B. That is 1 and 2 only. Okay, next question is, which of the following union territories in India have a legislative assembly? Ladakh, I think, don't have legislative assembly. Chandigarh also do not have. Puducherry have legislative assembly. So Puducherry, Jammu Kashmir and National Capital Territory of India. I think correct answer will be second, third, fourth and fifth. The next question is, the executive powers of the President of India are exercised by. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके बिहाफ पर किसकी रिकमेंडेशंस पर एक्सरसाइज करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशंस पर प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करता है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements with regard to the election of the President of India. A candidate can file more than one nomination paper. Yes, it's correct. An elector can propose or second the name of only one candidate. Yes, correct. The provisions of the anti-defection law are not applicable in presidential elections. I think it's also correct. The option of nota is not available in the presidential elections. Yes, it's absolutely correct. None of the above का जो option होता है नोटा वो presidential के elections में available नहीं होता है. I think all the statements are correct, so the correct answer will be option D, first, second, third and fourth. Consider the following statements with regard to the Cabinet Secretariat. It functions directly under the Ministry of Home Affairs. No, I don't think. I think this is correct. I've read somewhere it does not work under the Ministry of Home Affairs. It administers the Government of India Transaction of Business Rules 1961. Yes, it's correct. The Department of Personnel and Administrative Reforms was initially created under the Cabinet Secretariat. Yes, it's also correct. I think the correct answer will be second and third, that is option number C. Moving on to the next question. Consider the following pair with regard to the veto power of the President of India. Absolute veto. The President withholds assent to a bill passed by the legislature. Yes, absolute veto means the President a bill को reject कर देता है passed by the legislature. Yes, it's correct. Qualified veto can be overridden by the legislature with an ordinary majority. Qualified veto, I think it can be overridden with higher majority, which our Indian President does not have. हमारे Indian President के पास qualified veto available नहीं है. So they are interchanged. Suspensive veto can be overridden by the legislature with an ordinary majority. Okay, जहाँ पर जो president है वो पहली बार में क्या करता है, बिल को रिकन्सिडर करने के लिए बोलता है. ओके, एंड देन व्हेन द पार्लियामेंट send the bill again to the president, so it is bound by the president to accept the bill. Okay, तो यहाँ पर suspensive veto में क्या होता है, can be overridden by the legislature with an ordinary majority. So they both are interchanged. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, wrong हो जाएंगे. Next is pocket veto. The president takes no action on a bill passed by the legislature. Pocket veto, yes, the president मतलब क्या है कि president क्या करता है, बिल को अपने पास
रख लेता है फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड तक। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी डेफिनिट टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि प्रेसिडेंट को कब बिल पर एक्शन, कितने टाइम में बिल पर एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट, वो एंजॉय करते हैं पॉकेट वेटर, दैट इज प्रेसिडेंट टेक्स नो एक्शन ऑन अ बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी ओनली 2 आर करेक्ट। ओके, moving on to next question. Consider the following statements with regard to the Union Council of Ministers. The Council of Ministers resigns when the Lok Sabha passes the no confidence motion. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. Yes, this statement is correct because under Article 75 of the Constitution of India, it clearly says that the Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. Okay. Statement third, the Council of Ministers is bound by the decisions of the Cabinet. Yes, it's also correct. So, which one of the following incorrect is correct in respect to the above statements? इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी है जो एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट वन को? आई थिंक स्टेटमेंट वन को जो एक्सप्लेन कर रही है दैट इज स्टेटमेंट सेकंड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को, तो इसीलिए क्या होता है, दैट्स द रीज़न बिकॉज कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं जब लोकसभा पास करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो आई थिंक करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट and statement second explains statement 1. Okay, which of the following statements are correct with regard to the president of India and the US? Both are eligible to be re-elected to the office. Yes, दोनों eligible हैं। Indian president में any number of times can be elected, but in the case of US, the president of US can be elected only twice, मतलब 2 बार एक president invite हो सकते हैं। इंडिया के केस में any number of times president is eligible to be re-elected. Both act as heads of government. No, this statement is incorrect because इंडिया में head of government president होते हैं, but इंडिया में head of state कौन होते हैं? president, लेकिन head of government कौन होते हैं? prime minister। तो statement क्या होगी? incorrect. Both have the power to issue ordinances. This is also incorrect because the issuance of ordinances, this power is only in India, in Indian president. इंडिया के president के पास सिर्फ ordinance issue करने की power है। Other than no country in the world have this power to issue ordinances. So only one statement is correct, that is option C. Moving on to our next question. The territory was controlled by the Portuguese before being integrated into India by the Indian Army in 1961. It was granted a legislature in 1963 and became a state in 1987. It is, यहाँ पर हमें टेरिटरी बतानी है कि कौन सी टेरिटरी पोर्टुगीज कंट्रोल करते थे इंडिया को ट्रांसफ़र, इंडिया में इंटीग्रेट होने से पहले, जिसको लेजिस्लेचर ग्रांट किया गया था 1963 में और जो एक स्टेट बना था 1987 में। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट गोवा। तो गोवा एक ऐसी टेरिटरी है, एक ऐसा स्टेट है जो पोर्टुगीज़ के पास था पहले, देन ट्रांसफर टू इंडिया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन से इनमें से कौन से ऐसे हैं जो दोनों की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के भी एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नो, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट participate in the election of the president, but they do participate in the election of vice president. So this statement is incorrect. Elected members of legislative assemblies of states, elected members of legislative assemblies of state do participate in the president election, but they do not participate in case of vice president election. So this is also incorrect. So our correct statement will be option A, one only. Moving on our 12th question, that is, consider the following statements with regard to the vice president of India. No formal impeachment is required for his removal. Yes, it's correct.
No grounds have been mentioned in the constitution for his removal. Yes, इट्स ऑल्सो करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए. इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फिल द वैकेंसी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. येस, इट्स इनकरेक्ट. मैंडेटरी है कि अगर उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी टर्म को एक्सपायर होने से पहले जितना जल्दी हो सकता है वैकेंसी को फिल करनी चाहिए. ओके, सो ओनली टू आर करेक्ट, 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट ऑप्शन. Okay, moving on to our next question. Consider the following functions or powers. To advise the President on summoning and dissolving the Lok Sabha, to draft the President's address to Parliament, to enable the issuance of an ordinance, to prepare the legislative agenda for Parliament. How many of the above are exercised by the Union Cabinet or Council of Ministers in India? तो ये कौन सी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की या फंक्शंस हैं जो एक्सरसाइज होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर? आई थिंक ऑल आर करेक्ट. सब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही एक्ट करते हैं. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द 4. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 authorized the President to require the Council of Ministers to reconsider their advice. This statement is incorrect because 42nd Constitutional Amendment Act passed during the government of इंदिरा गांधी जी. उनकी गवर्नमेंट के टाइम पर ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया था बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यानी प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी ही पड़ेगी, ऐसा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था. तो यहाँ पर क्या लिखा है? रिकन्सिडर. नो, उन्होंने बोला था कि वो कंसिडर करना है. The 44th Constitutional Amendment Act of 1978 made the President bound by the advice of Council of Ministers. तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको इंटरचेंज कर दिया है. यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर ये. ओके, तो यहाँ पर ये इंटरचेंज होकर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हैं. तो यहाँ से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, मूविंग ऑन टू आवर 15th क्वेश्चन. With reference to the governor of a state, consider the following statements. This question is about governor. The Constitution of India mandates that the governor must not belong to a state where he or she is appointed. No, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है. इट्स जस्ट अ कन्वेंशन. गवर्नर जो होगा वो स्टेट से बिलोंग करना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है. दिस इनकरेक्ट. No civil proceedings can be initiated against the governor during his or her term of office. Criminal proceedings नहीं हो सकती but civil proceedings हो सकती हैं. This is also incorrect. He or she can contest in the election to the office of the president during his term of office. No, I think this is also incorrect. I think option D is. I'm not sure about this. Consider the following statements. The Constitution of India does not contain specific provisions for the selection and appointment of Prime Minister. Yes, it's correct. The Constitution of India does not require a person to prove his or her majority in the Lok Sabha before being appointed as the Prime Minister. Yes, it's also correct. Constitution ने ये नहीं बोला है कि पहले वो अपनी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करेंगे. वो विदिन 6 months अपनी जो मेजोरिटी है उसको लोकसभा में प्रूव कर सकते हैं. आई थिंक बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया, इफ नो कैंडिडेट रीचेस द रिक्वायर्ड कोटा टू गेट इलेक्टेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग, देन. मतलब अगर प्रेसिडेंशियल के इलेक्शंस में अगर कोई भी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिलता है, जितनी कोटे की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाता है, to get elected after the first round of counting, then what happens? A re-election is conducted between the two candidates with the highest number of first preference votes. Next statement देखते हैं. The election commission declares the candidate with the most preference votes as elected. The candidate credited with the lowest number of votes is excluded and all his second preference votes are distributed among the remaining candidates.
The ballot papers of eliminated candidates are cancelled and the process is restarted afresh. This statement is absolutely incorrect. अब हम चेक करते हैं. I think option C and option B can be the answer. I think the correct answer will be the candidate credited with the lowest number of votes is excluded and only second preference votes are distributed among the remaining candidates. अगर में ये कहा है कि अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में उसको रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिलता है प्रेसिडेंट को, ओके, जो भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन जो भी पर्सन लेंगे, तो अगर उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में नहीं मिलता है तो व्हाट हैपन्स, मतलब तो क्या होगा, कैंडिडेट के पास जिसको सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे उसको हटा दिया जाएगा एंड उसके जो सेकंड प्रेफरेंस वोट्स जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे रिमेनिंग कैंडिडेट्स को. सो आई थिंक द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 18. In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? An organ to ensure citizens directly participate in day-to-day government decision making. A channel for coordinating relations between the union and the states. A body dedicated to ensure political stability in the states. An agency dedicated to enforce and administer public policies. मतलब कौन सी appropriate characteristic होगी ब्यूरोक्रेसी के लिए. ओके, I think the appropriate characteristic for bureaucracy will be an agency dedicated to enforce and administer public policies. मतलब ब्यूरोक्रेसी यानी जो भी हम ब्यूरोक्रेट से भी हम IAS IPS जो भी हम इंशाल्लाह बनेंगे, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, एक एजेंसी जो डेडिकेटेड होती है इन्फोर्स करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए पब्लिक पॉलिसी, यानी जो पब्लिक पॉलिसीज़ को फर्दर सिटीजन्स के साथ इम्प्लीमेंट करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Every minister has the right to speak and take part in the proceedings of either house of parliament. Yes, it's correct. The total number of members in the Union Council of Ministers cannot exceed 10% of the total strength of the Lok Sabha. Unlike in the states, there is no minimum requirement of the strength of Union Council of Ministers. Third statement I think is incorrect. So first statement is absolutely correct. Has the right to speak and take part in the proceedings of either house of parliament. The total number of ministers in the Union Council of Ministers cannot exceed 10%. It's incorrect because it is 15%. The required limit is 15%. It's incorrect. Unlike in the states, there is no minimum requirement of the strength of the Union Council of Ministers. मतलब जैसा स्टेट्स में है, काउंसिल ऑफ यूनियन में ऐसा नहीं है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के स्ट्रेंथ के लिए. I think the statement is correct. I was previously wrong. So I think two statements are correct only. So option B will be the correct answer, only two. Next question is, which one of the following cites the doubts and disputes in connection with the election of the President and Vice President of India? What does this mean? कौन से जो हैं following decides करते हैं doubts और disputes in connection with the election of President Vice President? I think Supreme Court of India. Yes, I'm damn sure Supreme Court of India जो है final authority है in connection decides the disputes of President and Vice President. Okay, moving on to our next question. Consider the following bodies. How many of the above are headed by Prime Minister of India? इन bodies में से किसको Prime Minister head करते हैं? Interstate Council, GST Council, Animal Welfare Board of India, National Board of Wildlife, Niti Aayog. So first is correct, Interstate Council. I think GST Council is headed by Finance Minister, so it's incorrect. Animal Welfare Board of India. No, I don't think President had this.
National Board of Wildlife, yes, it's correct, and Niti Aayog is also correct. So I think only 3, option B is the correct answer. In which of the following cases are the governors in states vested with the constitutional discretion? इन कौन से केसेस में से गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है? रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्रेसिडेंट, recommendation for the imposition of the president's rule in the state, appointment of the chief minister when no party has a majority in the legislative assembly. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं कुछ. यस, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, आई थिंक दिस इज सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नर का डिसीजन लेना पड़ता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यस, वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Consider the following statements. The Council of Ministers does not automatically cease to function on resolution of the Lok Sabha. Article 74 of the Constitution of India mandates that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. Option second is absolutely correct because Article 74 clearly mention करता है कि Council of Ministers होने चाहिए Prime Minister के साथ एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को. लेट मी थिंक अबाउट स्टेटमेंट 1. आई थिंक ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट ऑटोमेटिकली सीज टू फंक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपना फंक्शन यानी अपनी जो वर्क हैं वो बंद नहीं करते हैं. सीज करना यानी बैन कर देना, कैंसिल कर देना लोकसभा के डिसोल्यूशन पर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. I think option A is correct. It's explaining of statement 1. So both statement first and second are correct, and statement second explains statement 1. Consider the following: Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Parliamentary Affairs, and Ministry of Defence. How many of the above are members of Cabinet Committee on Security? इनमें से कौन से जो हैं मेंबर्स हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में? सो आई थिंक होम अफेयर्स, फाइनेंस, डिफेंस. आई डोंट थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. लेट मी स्किप दिस क्वेश्चन. आई हैव अ डाउट. Moving on to our last question for the day is: consider the following statements. A person to be appointed as a minister in a state must be an elector for any assembly constituency in the state, recommended by the chief minister, and completed 25 years of age. मतलब कोई पर्सन जो अपॉइंट होगा एज अ मिनिस्टर इन द स्टेट, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस यानी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. ओके. An elector for any assembly constituency in that state, I think it's incorrect because it's a compulsory नहीं है. Recommended by the chief minister, yes. Completed 25 years of age. So I think option C is correct, second and third. Now let's check our answers. अब देखते हैं हमने कितने आंसर्स सही किए हैं. Okay, let's check our answer key. 1B, 2B, 3B. Let's check. Yes, first is correct. Second is also correct. Yes. Let's check for third. Third B, fourth A. Yes. Third is also correct. 4A. Yes. Very good. Let's check for question number 5.
D, C, B. Yes, fifth is also correct. Yes, seventh is also correct. So let's check for eighth. We have marked B. Yes, B, C, B. 8B, correct. 9th B, correct, yes. 10th B, yes, it's also correct. Let's check for 11th. A, C, D, D, E. A, yes, correct. C, yes, very good. D, it's also correct. And it's A. This is incorrect. The correct answer for question number 15 is A, only one. Let's check which of the statement is correct. So this is absolutely incorrect, I'm sure. Let's check for 15th explanation. Yes, I said first is not correct, second is also not correct because criminal proceedings नहीं हो सकती, civil proceedings हो सकती हैं. Third statement, yes, third statement is correct. Let's check for 16th. C, C, D, 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 B, C. Yes, correct. It's also correct. Yes, it's also correct. 19th B. Yes, it's also correct. Let's check for 21. B, B, A, C, C. Yes, correct. It's also correct. Again correct. 24th. 24th C. So we have skipped this question. So correct answer of this question is only 3. Yes, I was doubting myself. Ministry of Parliamentary Affairs is not there. Ministry of External Affairs are one of the members of Cabinet Committee on Security. Let's check for our last question for today, 25. Option C. What we have marked option C. Yes, is correct. So overall, I think only 3 are incorrect. Remaining 25 questions we'll cover in our next video. Thank you.